Good evening, you're watching Mission 2024, but for a brief while, what we're going to do in the next 20 minutes is put the spotlight on the few good men, or the League of Extraordinary Men, who rescued our 41 workers yesterday. All of that coming up next. First up, let me take you through the headlines. Day after rescue tunnel workers airlifted to AIIMS Rishikesh for 48 hours observation, 1 lakh compensation handed to all 41. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami speaks exclusively to India Today first, hails Prime Minister Modi's guidance, says all tunnel constructions will be inspected now. ये सारे जो भारत सरकार ने इसको सेफ्टी के आदेश कर दिए हैं, सबका सेफ्टी ऑडिट होगा जैसे भी जहां भी टनल वर्क चल रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने चूंकि टनल का काम काफी जगह पर हो रहा है। Home Minister Amit Shah hurls favours for questions taunt at Mahua Moitra, says Trinamool MP destroyed Parliament's sanctity. At least 6 states put on high alert in midst of surge of respiratory illness in China. Rajasthan, Karnataka, Gujarat, Uttarakhand, Haryana and Tamil Nadu ask hospitals to gear up. Days after Prime Minister Modi's Tejas sortie, big Make in India push by the Defence Ministry, deal to purchase 97 Tejas Mark 1A aircrafts on the cards. Rahul Dravid to remain Team India's head coach as BCCI announces contract extension. Dravid to continue with same support staff. Now, the Himalayan mountains presented a new challenge every day. The American auger machine that was flown in broke down several times. Ultimately, it was the grit of the rat miners to the rescue. 12 rat miners, split into 4 teams of 3, used spades, they used shovels, demolition hammers to reach the 41 trapped workers. India saving 41 trapped workers in an epic Himalayan rescue. This is the moment when a team of 12 Delhi-based rat hole miners pulled out the 41 trapped workers successfully, making the nation elated, relieved and emotional. Workers who spent 17 days in the heart of darkness took a sigh of relief. When the high-tech heavy machines failed to make any major breakthrough, human hands made India's biggest rescue mission a roaring success. It was on Monday when the 12 rat miners were pressed into the task of digging horizontally after the auger machine failed, its blades getting entangled in the debris. The last 10 to 12 meters of debris was proving too much for the sophisticated machines, but the gritty miners went where no machine had ever gone, burrowing through the obstacles in less than 24 hours. In an exclusive chat with India Today, the miners narrated the challenges inside the tunnel. में किसी ने रेस्ट नहीं किया, सबने मतलब जितना टाइम हमने उनको रेस्क्यू किया तब तक काम कंटिन्यू रहा। और आप इस चीज को हम ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी तारीफ ज्यादा कर दें, ये आप वहां से किसी से भी पूछेंगे सभी बताएंगे हमने कंटिन्यू काम किया। ये रियल है, रियलिटी है। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था जो 7 मजदूर की वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है उन्हें बचाना है। और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी। As the last pipe was inserted and the rat miners entered the seal cavity, the trapped workers erupted in joy and hugged them. Munna Qureshi, who was the first miner to reach the trapped men, narrated the elation all around. क्लियर नहीं करते तो वहीं पे रहते मगर वहां से वापस नहीं आते और आवाज मार के बुला लो। ऐसा हमें लगता नहीं था जो हम क्लियर ना कर पाए। हम 12 लोगों पे इतनी उम्मीद थी हमको हमसे क्लियर करके रखेंगे और हमने करके उन्होंने बोला कोई
प्रोसेस हुआ, आपका सामान था, मैंने जो भी चाहिए होगा आपको बता देंगे। उनका बहुत सहयोग था हमारे साथ, उन्होंने किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं रखी और हम आगे बढ़ते चले गए और उनके पास पहुंच गए। उन लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। The rescuers flashed victory signs signaling their massive win, which ensured that 41 workers returned safe to their families. India hails the fearless, the courageous rat miners and the heroes of the final rescue. Bureau Report, India Today. Munna Qureshi, Wakil Hassan, these are amongst the 2 of the 12 rat miners who were called in for the final breakthrough that led to the rescue of 41 workers after a grueling 400 hours. Take a look at these emotional reactions. देश का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो आप लोगों के ऊपर है। 1-2 दिन में वो ध्यान कहीं और चला जाएगा, चुनाव भी हैं और कुछ न्यूज आ जाएगा और मीडिया भी चला जाएगा उत्तरकाशी से। अभी जो है, जो मीडिया का ध्यान जो है, देश का ध्यान जो है, आप जैसे वीर लोगों के ऊपर है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रैट माइनर्स, मजदूर लोग, आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि इस स्थिति में आप लोगों के वजह से इस क्राइसिस में सफलता प्राप्त हुई है और वो जो 40 लोग थे वो बाहर सुरक्षित आ गए हैं। आप अगर सरकार को कुछ बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे? मैं यही बोल सकता हूँ, मेरे भारत के जितने भी वर्कर हैं या मजदूर हैं, उनके साथ सैलरी की तरफ से कोई वो ना किया जाए। जो कल को वो परेशान रहें, कल को उन्हें दिक्कतें आए, उनकी परेशानियां सही हों, जो इतनी सैलरी उन्हें दी जाए, जो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएं। जी, ये नहीं ऐसा होता है। आजकल कंपनियां चल रही हैं, जिन्हें टेंडर मिलते हैं, वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं और पैसे रोक लेते हैं। कभी उसे आधे दे दिए, कभी नहीं दिए, वो बेचारा भटकते डोल रहा है, कहीं कुछ कह ही नहीं पाता और वो वहीं तंग आ जाता है। उसकी फैमिली भी परेशान होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं इन लोगों को। तो इनके लिए मैं पीएम साहब से यही कहना चाहूँगा, ये सुविधा करी जाए। मेरे जितने भी वर्कर हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे वर्कर जो भी पूरे भारत के हैं, जितने भी हैं, उनके साथ बहुत वो करा जाए। और आपके बारे में बताइए मुन्ना भाई, आपके बारे में जो परेशानी है आपके काम में, उसके बारे में जरा बताइए। सरकार आपको ही सुन रहा है अभी। नहीं, मेरे काम में क्या परेशानी, हमने तो जो करना था वो कर गए। अब हमें क्या दिक्कत है? हमें तो बहुत खुशी है। मुझे इतनी खुशी है, मेरी इस उम्र में कभी मैंने इतना नहीं खुश हुआ हूँ जो आज मुझे खुशी है। मैं रोता नहीं हूँ, मैं कभी रोता ही नहीं, मगर इस खुशी ने मुझे रुला भी दिया। 3 बार रोया, मैं कभी नहीं रोता, मुझे इतनी खुशी है। मुन्ना भाई, आपका जो इमोशन है, जो जज्बात है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आप वो टनल आपके बिल्कुल पीछे है जहां पे आप गए थे, जहां पे आपने धरती को खोदा, पर्वत को खोदा और उन लोगों को बाहर लाया। मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चे से मिलेंगे, कल परसों जब भी आप उनसे मिलेंगे मुन्ना भाई, आप उनको क्या कहानी बताएंगे? किस डिटेल में आप बताएंगे कि क्या हुआ था वो सुरंग के अंदर? हमें भी सुनाइए। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कल ये चीज मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता। नहीं दिखाना चाहते हो? क्यों, बताइए। मैं ये चीज उन्हें दिखाना नहीं चाहता, नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं बेटा इंजीनियर बने, पढ़े लिखे। जी, माफी चाहता हूँ आपसे। मुन्ना भाई, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, आपकी दिल की बात हम समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ और बने और ये जो खतरनाक काम है वो नहीं करें, ये है बात आपकी? मैं अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहता। 40 लोगों, फिर 41 लोगों के जान बच गया है, इसलिए आपके बच्चे, देश के बच्चे, वो पूछेंगे आपसे, जब भी आप मिलेंगे कहीं बाहर में, आपके गांव में, आपके शहर में,
वो पूछेंगे कि क्या हुआ था, आपने कैसे किया था। मैं मानता हूं कि आप अपने बच्चों के इस काम में नहीं लगाना चाहते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जब कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने ये इतना बढ़िया, खतरनाक और वीर काम किया है, तो आप क्या बताएंगे? मैं एक ही बात कहूंगा, बेटे कहीं ऐसा मौका आए तो वहां जाना, नहीं तो और कोई काम का भी करना मत, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि एक आदमी के 40 आदमी के चक्कर में एक आदमी चले जाए तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 40 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, 41 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, उनकी माँ भी, भाई भी, बहन भी, बच्चे भी। एक आदमी के पीछे कोई नहीं होता है, 2 बच्चे होते हैं, वो पल जाते हैं। जैसे मैं पला इस दुनिया में, सर मैं माफी चाहता हूँ। Well, it is actually the grit of a few good men like Munna Qureshi, who you just heard. And the irony of it, today hailed all across for getting our men out, 41 of them trapped workers, and doesn't even want to tell that story to his children because he wants his kids to grow up into being engineers, because the profession he's kept for years has been looked down upon. For no reason, he says that. Meanwhile, the wait clearly over for 41 trapped workers out after over 400 hours of dedication and drilling. Administration will send the rescued workers home after medical checkups. 41 families are at ease finally and cannot wait to welcome their loved ones home. It was a dark Diwali for 41 families as the Silkyara tunnel collapsed on 12th of November, trapping workers inside. "17 days later, the light is back in their lives. As the workers walked out of the tunnel safely, many celebrated the Diwali they could not, setting off fireworks, exchanging sweets. The families have spent the last 2 weeks praying. दिन सोते हैं तो रात को न, रात सोते हैं तो दिन को न, ऐसे मरने ने बुलाते थे, उसी पर में ध्यान। हाँ, उसी पर में ध्यान लगते थे कि कब से कब बेटा देखेंगे, कब से कब बेटा निकलेंगे कहीं। And now preparations are on to welcome their loved ones. हम रोज दिन दुआ मांगत रही कि ऊपर वाला के बढ़िया से निकलावे। बहुत अच्छा लगा, एखने इतना बाहर आए के तो बात कर दिले तो इतना अच्छा लगा, मन खुश हो गया। The administration is making arrangements for the rescued workers to return once they are medically cleared. A grand homecoming awaits the 41 workers. Bureau Report, India Today. As we celebrate the heroic efforts of our rat miners and others to bring out our 41 trapped workers after 17 days, it's also time now, viewers, to ask some very tough questions. Were norms violated, which we've realized were, by the engineering company that was dealing with this tunnel, especially the widening of the road? And on whose watch? Who signed in on it?